Hello friends, welcome back to our channel Priyanshu Placement Solutions. Friends, in this video we will talk about technical MCQs that is asked in 12 September 2021 in TCS NQT. Okay, TCS NQT में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स. और इफ यू नॉट वॉच अवर coding video friends, please guys go and check out these videos as well. Okay, in this video guys I will already told that coding question with explanation and code है ना, and this code is available on the in this PDF, so you can download this PDF and practice this question है ना. लॉजिक वगैरह समझ लेना, इस PDF को डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद है ना. ऐसी डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो, देन यू कैन वॉच दिस PDF एज वेल है ना. सो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. इफ यू अनेबल टू join telegram channel through the link, so you can go to the telegram and you can search at the Priyanshu Placement Solution. You will get our telegram channel. Okay, so let's discuss guys question है ना. So friends, question are these है ना. First question is this. Okay, let's discuss. So friends, as you see, this is the prefix expression है ना. In these guys I have told that in the postfix I have already told this in my previous videos है ना, पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स. तो सी अगेन वी विल डिस्कस इन द पोस्टफिक्स गाइज. इफ वी राइट ए बी डिवाइड, देन इनफिक्स ए डिवाइड बाय बी, एंड प्रीफिक्स वी विल राइट डिवाइड ए बी है ना. दिस आर द फॉर्म्स. ओके, एंड वी नीड टू फाइंड द आउटपुट यूजिंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ना. दिस इज द प्रीफिक्स. ओके, सो हाउ वी डू, लेट्स सी गाइज. लेट्स चेंज द कलर. कोई सा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं क्योंकि रेड ज्यादा बेटर रहता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस गाइज. सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस प्रीफिक्स टू इनफिक्स है ना. You need to convert prefix to infix because guys we will do the prefix है ना, sorry not prefix, infix. infix में अपना mathematical concept question को solve करते हैं. Let's suppose m plus n, so this is the infix है ना, infix, not a prefix and postfix, this is the infix. तो इतना हमें easy करना रहता है. तो let's convert this, or we will how to solve this prefix, let's see. So guys, these I will solve using the stack. Okay, and in the stack guys you need to move from right to left है ना, right to left. You can go to right to left. How we do, let's see. So we will take one stack that is like this है ना. Let's suppose guys this is the stack, and in this stack I will put the elements from the right है ना, or whenever we get operator we just pop out the elements. Okay, let's see. So first element from the right to left is 1, so I just put 1. Then next element is guys 3, then next element is 9 है ना. After that guys, as you can see we got the divide operator. We got divide, so we will divide 9 divided by 3 है ना. We will apply 9 divided by 3. Now new stack is, now guys the new stack is, I will change the color so you will get, yes this is the new stack. Now guys in the new stack what are the elements are there? First one is 1, clear. Next one is 9 divided by 3, right? 9 divided by 3, that is 3, clear. Let's move to these elements. Then 2, then after 2 there is 7, clear guys, 7. Okay, yes. Then after that guys, as you can see we got the star, we got the multiply, so we pop 2 element and we perform the multiply operation, that is change the color for your better explanation. So 7 multiply, because multiply are there, so we will do 7 multiply 2, that is 14, clear, that is 14, and here is 3, clear ना. So now guys we have new stack ना. new stack में क्या हो गया, 1 3, then after 7 multiply 2, that is 14, clear guys. Then after this we will got the minus, so we will do again pop, so 14 minus 3, that is 11 है ना. change the color for new stack. Let's take this color. So in the new stack guys, as you can see, let's make a new stack that is 1 and 14 minus 3, that is 11, clear, 11. Now after that in the last we got plus, so we just plus pop out these 2 elements, 11 plus 1, that is 12. So guys 12 is our new answer, 12 is our final answer. And now in the stack only one element is there, so this is the answer guys. So करेक्ट आंसर इज 12. आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है ना. क्लियर गाइज. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंटीजर digit 0 है ना. So as you can see guys, digit is 0, that is it means that in the digit
false is store है ना, false store है. So then how we do? If digit, so digit value is 0, right? Digit value is 0. So if false, this condition is false, then else part, move to else part and digit is printed. Clear? Digit is a correct answer. Okay guys, I hope you got it this question guys, है ना, समझ में आ रहा होगा. Let's move to next. In the next question guys, as you can see, what is the output of the code? Include x, y, z, and this is the function, built-in function we can say. And let's do the start from the main, है ना. main से start करते हैं. क्या क्या दिया हुआ है? I equal to 5, j equal to 6, okay, int k equal to 0. Then function, है ना, in the function we will pass the reference of the variable, that is I and a, and it means reference of I and reference of j. It means guys, whatever value change in the I and j in the function, that is m, p and n, it also reflect your I and j value in the main function, because we use the reference and pointer concept. Okay, so let's discuss guys. So here p and m, so star p is nothing but a 5 and star q is nothing but a, actually this is not a star, we will say in a program में, that is asterisk, है ना, एस्ट्रिक बोलते हैं गाइस उसको, ठीक है. लेकिन स्टार बोलना इजी होता तो मैं स्टार बोल देता हूँ, कभी एस्ट्रिक भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ क्यू, सॉरी नॉट क्यू, हेयर इज एम, है ना. सो हेयर इज स्टार एस्ट्रिक एम, है ना, हेयर इज एस्ट्रिक एम, एंड हेयर एस्ट्रिक एम वैल्यू वी पास इज 6. क्लियर? देन वी विल डू m plus 3. So m plus 3 is nothing but 6 plus 3 is 9, and p plus p equal to p plus m, p equal to p plus m, so p equal to p plus m, that is 9, that is 14. So in the new p 14 is stored. Clear? And in the m 99 is stored. And guys, return, only return is right, so it means guys this is not return anything, है ना, इसमें कुछ रिटर्न नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि void लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है. So let's come to this now. k equal to, now I will talk for this expression guys, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. So k equal to I multiply k equal to I multiply j. So I multiply j guys means the value of I is now 14. Clear? And the value of j is 9. समझ में आ रहा होगा guys. So 14 multiply 9, है ना, you can do this. 14 multiply 9 is 9 4 ja 36 and 26. So 126 is your correct answer guys. So I hope guys you will got it this question. Okay, let's move to next. In the next question, for loop is there. So yes, in the for loop this is the if condition. Okay, let's see. Skip num equal to 1. Loop is executed from 1 to 5, है ना. Loop value is executed 1 2 3 4 5. As you see in my pseudocode video guys, whenever we solve the for loop, we will write this type, है ना. loop की वैल्यू कौन कौन सी रखने वाली चलने वाली है वो सब हम पहले लिख लेते हैं ना. अगर आपने pseudocode वाला वीडियो देखा तो आपको पता होगा कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल skip num is 1, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल skip num is 1. फॉर 1 guys, skip num equal to 2, no. Skip 1 equal to 4, no. Condition is false, so skip 1 is printed, that is 1 is printed. Then again the skip num is 2, that is value is 2. Now 2 is equal to skip num 2 equal to, yes, condition is true and it is continue and this is not printed na. Then again value is 3, so condition is false, skip num is printed. Again value is executed, skip num equal to 4, yes, 4 is there. So again this is continued, and whenever the value of 5 in skip num is printed 5. Why? Because if 2 and 4 is there, then we will continue the loop, else we will print the value. So output is 1 3 5. I hope you got it. So this is the next question guys. In this question, let's see. So here rate is 15, piece is 10 and enter im result 0. ठीक है. So let's see. In this variable we will store rate % with piece. So what is the value of rate? Nothing but 15. 15 is the rate value, % with piece, the value of piece is 10. So our answer is 5. Clear? So in this variable 5 is stored. Clear? Then result equal to result plus enter im divided by 5. So 5 divided by 5, that is 1. In the result plus 1, so result value is 0, we will plus the 1. Okay, and just print the result, answer is 1. I hope you got it this question. बहुत easy question था, ठीक है. Let's move to next.
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यू नीड टू डू एक्सोर ऑपरेटर, ठीक है। एक्सोर ऑपरेटर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बाकी इजी क्वेश्चन है गाइज, इजी क्वेश्चन आए थे, ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी एंड इफ साइड एक्सोर लाइन, so line and side both are 3 3, and guys as I told in my previous video that is if both side is same in the XOR then you will get the 0, so 0, so does not 0, so this give the true, this give the true, so condition is true guys, triangle is printed, क्या print होगा, triangle triangle, okay। and guys I will provide this link in the description, so you will join this WhatsApp group as well as the Telegram channel friends, है ना। again and again I told that is I will provide this PDF in my Telegram channel, so you need to join this channel, or if you want to join our WhatsApp group please go and join this WhatsApp, because friends many times solution unable, we are unable to upload solution on the YouTube channel, so at that time we will provide the solution on these two groups, है ना। so we will join these two groups guys, है ना। so let's discuss next. in the next question guys, predict the output of the following xyz and using okay, so let's come on the main function. in this variable a equal to 3 and b equal to 5 guys, है ना, and in this we will take a while loop. in the while we will do b minus minus, that is post, है ना, post है ये, ध्यान से देख लो, post है, then a plus plus. how we perform this, let's see, इजी है ये वाला भी। क्या करना है आपको, वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ यू कैन डायरेक्टली एड दिस टू थिंग्स, दैट इज आंसर इज 8, क्लियर। हाउ इट एग्जीक्यूटेड, लेट्स सी, द वैल्यू ऑफ 5, b is 5, so first of all 5, so a plus plus that is 4, then value of b is incremented by 4, the value of a is 5, then 6, then 7, then 8, and here is 4 3 2 1 and 0, clear। I hope you will got this question as well, clear guys। easy question है इसलिए ज्यादा अच्छे से वो मैं नहीं कर रहा है ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, okay। let's move to next question is evolution of psychometric complexity come under which of the which type of testing, that is white testing, okay। इसका आंसर क्या है, white testing, okay। next is which type of data structure is suitable for implement JSON format, JSON format is like nothing but like this type, है ना, this type is a JSON format, है ना, this type of pattern is called JSON format, okay guys, है ना। dictionary type in the Python, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, AVL tree is the best data structure to store this type of value, clear guys। so I hope सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। let's discuss something that is not related to TCS NQT. so guys if you not join our Telegram and WhatsApp group please go and join our Telegram channel as well as WhatsApp group friends, है ना। जल्द से जल्दी ज्वाइन कर लो, इसको शेयर करना मत भूलना, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड XYZ, सबके साथ शेयर कर देना इसको। कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, एंड दिस PDF अपलोड इन टेलीग्राम, है ना। if you not join our Telegram channel guys please go and join this channel, है ना। I will provide this PDF in the Telegram channel, so you will go, है ना। अगर Telegram चैनल का लिंक वर्क नहीं करता डिस्क्रिप्शन में, you can go to the Telegram, search @Priyanshu Placement Solution, you will got this। and guys if you not apply in the EPAM, है ना, you can apply, है ना, EPAM whatever you say for this company, है ना। I don't know about your pronunciation for this, है ना। many time I will say EPAM, है ना, जो भी बोलना बोल देना, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट yes you need to apply in this, है ना। और बस फ्रेंड्स इस वीडियो इतना ही ना। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाया तो इसको आपको टेलीग्राम से जाके आपको करना पड़ेगा अप्लाई। इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पोस्ट का, तो यू कैन गो एंड अप्लाई इन दिस, ओके। सो चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को एज वेल एज यूट्यूब, सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोनों वीडियो देखना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और in the next video we will try to cover more questions that is asked in yesterday's slot, okay। thank you guys, and this PDF I will provide in this Telegram channel only, clear guys। so I hope समझ में आ गई होगी सारी बातें। धन्यवाद देखने के लिए, let's meet on the next।